So, good day, everyone. Welcome to this webinar on navigating a successful career in cybersecurity by Aditya Chillar. Before we delve into the session, let me provide you some background information about Aditya. Aditya is a distinguished cybersecurity expert with over 5 years of experience. He has collaborated with leading cybersecurity companies in India and played a vital role in securing multi-million projects for esteemed organizations like Flipkart, Nykaa, Paytm, Maruti Suzuki India, Hero Motocorp, Adani, Indigo Airlines, and many more. Aditya's expertise in cybersecurity comes not only with their industry experience, but also from their contribution to ACPL, Cybersecurity Training Division. In this role, they have imparted their knowledge to the numerous students, equipping them with necessary skills for a successful career in cybersecurity. Aditya takes a pride in their students' achievement as all of them have secured employment and excelled in their cybersecurity roles. You have encountered any cyber breach or cyber attack on an individual level, right? And you're not aware about that something has been stolen from my system, right? So how will you get to know? So you can set up security tripwires like the military setups, right? So as you can see here, there's a grenade and there's a pin, and to the pin we have the wire attached. So anytime any intruders tries to trespass the area, they will be killed, right? So we can similarly set up the tripwires in our laptops. So anyone tries to gather the information, right, or try to hack the information out of our system, the moment they will breach that or try to open that, will get an email, right, that someone from this location or this IP address has actually accessed or this very file. You can enter your email address, like I enter mine. It will just take you 2 minutes to set up. And you can enter a brief about the token. So suppose I want a token in a Word file, right? And that Word file is located in my passwords folder. So I'll name it password file located on my laptop. I'll click on DNS HTTP. I'll click on generate token. I'll go to MS Word. I'll click here to download a document. So this has downloaded this document, right? So I'll open the documents. So you can see there are two documents. One is this one, right, which I've just downloaded. Other one is this one, which I actually created earlier, right? So this has my files and my passwords in it so that it looks authentic to the attacker. So whenever he tries or she tries to open it, so they can see, okay, this is actual information, but this is already fake. So you are supposed to keep a fake information over here. Don't put the real information. This is a fake information, right? So the moment attacker tries to access this file, they have copied this file in their system and they try to open it, right? The moment they open it, you will get an email address. You'll get an email address like this: alert station at candidate token triggered. You'll get this token was triggered on this time, right? Word doc in password folder, whatever you mention here, right? And the source IP. And if you'll go to Google, you can see this source IP. You can search out the location as well. So if you'll do IP lookup of this IP address, you will see that this IP address is actually located in Delhi region. So because of all these incidents or the attacks that have been carried out by individuals or by the nation states who are actually the enemy nation of India, right? The importance of cybersecurity is increasing. And because this is increasing, the attacks on the infrastructure or on your individuals or organizations are actually increasing. Recently, we have seen that the attack has been carried out on the All India Institute of Medical Sciences, AIMS, and 1.3 TB of data was actually encrypted. So it was a ransomware attack which encrypted the AIMS data. So I would urge all of you to go and read this draft of National Cybersecurity Policy, because when you'll go in an interview or for your personal growth, right, this will be very helpful. So you can discuss on this part, and this would actually give the importance that actually you have information. What is actually happening and what India is actually planning for the next 10, 20, 30 years. One of the example that I can give from the NCSS is 15 to 20% of all government infrastructure that government is procuring will be on the cybersecurity. So now we have understood, okay, cyber attacks are increasing, jobs are there, but skills are not there, right? Skills are not present. So now we'll see how we can work on these skills, what actually entails the skill part.
how we can actually enhance the skill part, whether it requires any training, all that part. So this is the part. If you'll be able to work on your skills, jobs are pretty much there. Every organization, every department has job for cybersecurity people. So you can easily get job if you are skilled. Give me a second. Okay. I hope I'm not moving too fast, guys. I'll just actually, yes, Jeevan, correct. The G20 summit was regarding the same. Thank you. Thanks, David. Okay. So now you want to start your cybersecurity career, right? But okay. So you need clarity what organizations actually provide the jobs, the cybersecurity jobs, right? What kind of organizations are out there? Because you can't go and apply in every organization. You need the clarity. Okay, I want to start a cybersecurity career, and these are the organizations, and what suits me. So you can accordingly, yeah. Thank you guys for raising hand. Okay. So types of companies and organizations that are out there in the cybersecurity domain are basically, first one is the cybersecurity consulting firms. So these consulting firms are specialized in providing consulting for the companies, right? So they assess the cybersecurity risk, develop strategies for the organization that this is how your cybersecurity strategy should be. And these are the components that you should have in your organization to prevent against cyber attack. So suppose government of India is facing cyber attack, AIMS is there. Now they have consulted Certain. So Certain has become a consulting agency, right? That, okay, you should have these things in your organizations to prevent against cyber attack, right? So such kind of companies are known as the consulting firms. So the examples of such companies is KPMG, EY, PwC, Deloitte, etc. Right? So if you want to start or go into a consulting career, you can apply for these firms. Then comes the managed security service providers. So managed security service providers is the companies who actually manage the whole cybersecurity part for you. So suppose an organization is there, suppose Reliance, right? Reliance don't want to do the cybersecurity part for themselves, or Geo, because Geo is in telecom. They're like, I want to focus only on the telecom. So they'll offload their cybersecurity to a third party, right? Anyone. So those companies who will manage the complete cybersecurity for other party or other company are known as managed security service provider. They in and out, the complete cybersecurity for the Geo will be managed by such companies. So ACPL, in which I am actually working, I'm an employee from the last 5 years, is actually MSSP. And then IBM, HCL, and other companies we have in this. So similar kind of companies. Then we have technology and security software companies. So these are the companies who actually develop and build the software, which actually help you prevent the cyber attack. So suppose in an organization, we use firewall, right? We use antivirus. So that antivirus has to be developed by an organization, right? So these organizations, technology, security, software companies, they are actually called OEM, original equipment manufacturer, right? They're also called OEMs. So they build the tools which are being deployed to secure the organizations from the cyber attack, right? You can read the details here. So Microsoft, AWS, Palo Alto, F5, ACPL. So ACPL also builds security softwares for organizations, right? So we are also in that. Okay, someone is asking, can you please speak in Hindi? हाँ जी, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ. But I guess majority of the aspirants. Can I quickly have a poll here? How many of you want me to speak in Hindi? Can I quickly send yes? English, ठीक है? David, any? I love English, ठीक है? If everyone is fine with Hindi, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, because अगर उन बच्चों को ज्यादा जरूरत है यार जो हिंदी में बैठे हैं, इनको समझ नहीं आता, they need more help. बस चलिए, ठीक है. Okay, so let's keep it Hindi English mix रखते हैं, because cyber security में if you're planning to start a career, then you should have a good communication skill and the good command over English as well. तो English पे आपकी अच्छी command होनी चाहिए अगर आप plan कर रहे हो
करियर स्टार्ट करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, बट फॉर द ग्रोथ यू शुड प्लान टू लर्न इंग्लिश एज वेल। ठीक है, अगली कंपनी आती है हमारी, वी हैव नेक्स्ट कंपनी आईटी सर्विस सिस्टम इंटीग्रेटर, राइट। सो दीज आर द कंपनीज, ये वो कंपनियां हैं जो हमें सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने में हेल्प करती हैं, राइट। सो एम्स को बोला गया, जैसे सर्टिन आया, सर्टिन ने बोला एम्स को कि यार आपका ना एंटीवायरस पास है, इट्स आउटडेटेड, राइट। सो नया एंटीवायरस लगाइए। सो दे विल गो टू एन ऑर्गेनाइजेशन, आईटी सर्विस एंड सिस्टम इंटीग्रेटर, दे विल लाइक कि वी नीड अ गुड एंटीवायरस, get it for us and implement us. ठीक है, so those kind of companies who actually implement or manage the part cybersecurity solutions, right? Those companies all fall under this domains. ACPL, IBM, HCL, Deloitte also fall. Deloitte also do the consulting and this part, right? So ये चीजें हैं कि जहाँ जो आपका एंटीवायरस इंप्लीमेंट करेंगे, फायरवॉल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली आके लगाएंगे, राइट। सिर्फ ऊपर ऊपर से कंसल्टेंसी नहीं कर दी कि आपको यही चाहिए, ठीक है ये लगा लेना, ये लगा लेना, हवा में बातें नहीं, राइट। एक्चुअली ग्राउंड पे जो काम करते हैं, so वो वाला काम जो होता है। देन कम्स द अदर कंपनीज, राइट। अदर कंपनीज में आपकी होती हैं जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे एम्स हो गया, एम्स इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्ट, राइट, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे आपकी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जैसे आपकी आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, राइट। आपकी ई कॉमर्स साइट होगी, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। तो अब इन कंपनियों के अंदर भी इनकी खुद की टीम होती है साइबर सिक्योरिटी की। तो एक तो हो गया ये सारी कंपनीज, ये चारों, तो इसमें आप किसी और को सर्विस दे रहे हो, राइट। बट इन दीज कंपनीज यू आर एक्चुअली वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जियो हो गया, यू विल बी पार्ट ऑफ जियो's टीम टू प्रिवेंट एंड सिक्योर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज की भी जॉब्स निकलती हैं एंड यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर दैट। सो ये हमारे पास कैटेगरीज होगी, इसके अलावा हमारे पास कैटेगरी नहीं बचती है, यही 5 कैटेगरी होती हैं। सिक्स आप लेना चाहो तो आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ले सकते हो कि जो ट्रेनिंग देते हैं साइबर सिक्योरिटी की। सो यू कैन आल्सो वर्क एज अ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर इफ यू आर एक्चुअली गुड, राइट। सो दैट वुड बी द सिक्स्थ पार्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे हमारा पीडब्ल्यू है, सो फिजिक्स वाला, सो फिजिक्स वाला इज आल्सो प्लानिंग टू एंटर इनटू द साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग पार्ट। So if you're good at cybersecurity, probably from the next year, they're planning that. So you can go there, you can work with them to provide the cybersecurity training. Now, कंपनीज हमें पता चल गई। अब कंपनीज के अंदर जॉब कितनी कैटेगरीज की होती हैं? सो 2 ही कैटेगरी की होती हैं आपकी जॉब्स, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है। ठीक है, अब दिस वुड हेल्प यू डिसाइड किया, ठीक है मुझे करियर बनाना कहाँ, राइट। सो एक होती है हमारे पास रेड टीम, वी हैव रेड टीम, एंड देन वी हैव ब्लू टीम। So red team is basically on the offensive attack team. They are on the offensive side. Blue team is on the defensive side. So suppose we have an organization, AIMS का example लेते हैं। So suppose we have AIMS, ठीक है। So जो blue team होगी, blue team will help कि यार जो अटैक हमारे पास हो रहे हैं, उन अटैक्स को रोका कैसे जाए। चाहे वो फायरवॉल लगाना है, फायरवॉल पे कुछ पॉलिसी बनानी है, चाहे वो ईडीआर को स्ट्रेंथन करना है, डीएलपी, जो भी सॉल्यूशंस है साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, उनको स्ट्रेंथन करना है, इंप्लीमेंट करना है, दैट विल बी पार्ट ऑफ द ब्लू टीम। रेड टीम का पार्ट होगा कि मैं इसको अटैक करके अंदर कैसे घुसूं, टू फाइंड आउट द ब्रीच, यार और अंदर कैसे घुसा जा सकता है ताकि उस लूप होल को बंद किया जा सके, राइट, इन फ्यूचर, ताकि उस लूप होल से कोई और अंदर ना आ जाए। So that's why companies have blue team or they tie up with companies who actually operate on the red team part. Sorry, red team. So that's why companies operate on the red team level as well. ताकि वो अटैक्स करवा के भी देख सकें कि ऐसा तो नहीं है कि हमने सिक्योरिटी लगा दी है, बट जब तक इंट्रूडर आएगा नहीं पता कैसे चलेगा कि सिक्योरिटी कितनी इफेक्टिव है, राइट। इंडियन के बॉर्डर्स पे वी हैव बीएसएफ, वी हैव आईटीबीपी फोर्सेस, उनकी इफेक्टिवनेस तभी पता चलती है ना जब पाकिस्तान से इंट्रूडर्स आए और उन्होंने उनको रोक दिया, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी तभी पता चलेगी जब बाहर से इंट्रूडर अटैक करेंगे। सो सिमिलरली वी हैव रेड टीम। सो रेड टीम में आपका क्या आ गया, आपका आ गया एथिकल हैकिंग। ठीक है, एथिकल हैकिंग इज व्हेन यू हैव गॉट द परमिशन, सो एनी हैकिंग दैट you are doing with the permission is known as ethical hacking. Ethical hacking is like cracking into an system. You're cracking into AIM system, you're trying to crack, right? But ethically. You have got permission from AIMS that yes, आप ये कर सकते हो, आप अंदर अटैक कर सकते हो। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एथिकल हैकिंग का ही एक सब डिवीजन है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, सोशल इंजीनियरिंग, वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग,
ठीक है, ये सब डोमेन्स आपके आते हैं। देन कम्स द ब्लू टीम पार्ट। ब्लू टीम में हमारे पास क्या जॉब होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। सो एम्स का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपका मेरा हेल्थ डेटा रहता है, हम जाते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स रहते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी करना। जितना भी कम्युनिकेशन जो कंप्यूटर्स डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, स्कैनिंग के लिए, आपकी एक्सरे मशीन्स हैं, आपकी एमआरआई मशीन्स हैं, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसकी सिक्योरिटी। डैमेज कंट्रोल, इंसिडेंट रिस्पॉन्स। आपका अगर कहीं अटैक हो जाए, तो अगर अटैक जैसे एम्स में अटैक हो गया, अब अटैक को रोकने के लिए सर्टेन आई, सो सर्टेन डूइंग द इंसिडेंट रिस्पॉन्स की ठीक है, अटैक 1.3 टीबी एनक्रिप्ट हो गया, इससे ज्यादा एनक्रिप्ट ना हो, हम इसको यहीं पे रोक सकें। ऑपरेशनल सिक्योरिटी, थ्रेट हंटिंग। थ्रेट हंटिंग इज लाइक, अगर कोई थ्रेट प्रेजेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उसको थ्रेट को बढ़ने से पहले रोक लें। मतलब अभी वो थ्रेट ने कुछ एनक्रिप्ट नहीं किया है, वो साइलेंटली प्रेजेंट है। नाउ कम्स द करियर पाथ इन साइबर सिक्योरिटी। अभी हमने दो डोमेन्स की बात करी, रेड टीम एंड ब्लू टीम। सो ये जितने भी आपको करियर दिख रहे हैं, ये या तो रेड टीम में फॉल करेगा या तो ब्लू टीम में फॉल करेगा। बट प्राइमरीली मैं बताता हूँ आपको, जो जॉब्स ज्यादा रहती हैं, दे आर इन द ब्लू टीम। ठीक है, अगर मैं एवरेज दूं आपको, तो 80% जॉब्स जो होती हैं वो ब्लू टीम में होती हैं, और 20% जॉब्स जो हैं वो रेड टीम में रहती हैं, कंपैरेटिव अगर हम बात करें। बिकॉज द पर्पस ऑफ रेड टीम, राइट, इज टू सिक्योर द ऑर्गेनाइजेशन। आपको ब्रीच करना किसी का इंटेंशन नहीं है, अनटिल अनलेस यू आर एक्चुअली अ हैकर। उनका तो इंटेंशन है ब्रीच करना, ठीक है, बिकॉज देयर सोर्स ऑफ इनकम इज दैट। But at the end of the day, goal is to secure the organization. So how you can do the security? By having a blue team. Okay, that's why organizations prefer more on the blue team side. Red team के लिए we have limited organizations. ठीक है, those who work on the red team. अब इन पांच के अलावा we have few mentioned here. साइबर, ये हमने डिस्कस कर लिया। आर्किटेक्ट, इंजीनियर का ही एडवांस वर्जन में आर्किटेक्ट आ जाता है जब आप सीनियर हो जाते हो। इंजीनियर हमने बात कर ली। साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर, जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ने हमने बात करी, ठीक है, यू कैन ऑल्सो बिकम इंस्ट्रक्टर। मैनेजर, इंजीनियर के बाद ही और सॉक एनालिस्ट के बाद, व्हेन यू ग्रो 5 years 6 years 7 years, यू बिकम मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट, 2 3 years के बाद यू बिकम प्रोजेक्ट मैनेजर। रिसर्चर, सो सपोज यू आर एक्चुअली वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दोज हु आर डूइंग रिसर्च, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो उनकी रिसर्च टीम होती है बहुत बड़ी, कि यार और हम क्या डेवलप कर सकते हैं ऐसे साइबर सिक्योरिटी में। जैसे देयर वाज अ टाइम जब इंटरनेट भी डेवलप किया गया था डार्पा के द्वारा, राइट, तो डार्पा वाज द रिसर्चर्स, तो डार्पा के रिसर्चर्स ने डेवलप किया था। तो वो होता है रिसर्च, जो R&D टीम होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन। देन टेक्नीशियन, डेवऑप्स डेवलपर। सो डेवऑप्स डेवलपर इज, सो इसके लिए ना आपको प्राइमरीली डेवसेकऑप्स के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये कुछ है, जैसे ये हो गया हमारा, और आई गेस यही है डेवसेकऑप्स के लिए। आपको प्रोग्रामिंग आना, मैं कहूंगा, मस्ट है। बाकियों के लिए अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, सिर्फ समझ में आती है, करनी नहीं आती है, ठीक है, तो यू कैन थ्राइव एट प्रोजेक्ट, बट दिस प्रोफाइल रिक्वायर्स यू टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग। विदाउट दिस यू एक्चुअली कांट डू वेल इन दिस प्रोफाइल। तो डेवसेकऑप्स के लिए प्रोग्रामिंग इज मस्ट, राइट। इसके लिए आपको क्या हो रहा है, सिक्योर जब कोड बनता है, कोई भी कोडिंग आपकी जो टीम कर रही होगी, सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी इन द पाइपलाइन, ताकि वो कोड कोई ब्रीच ना कर सके। तो सिक्योरिटी कोड में डालने के लिए आपको कोड समझ आना चाहिए, कोड लिखना आना चाहिए, सो यू कैन गाइड टीम कि यहाँ पे गैप है, एंड दिस इज वेयर वी कैन एक्चुअली ऐड। फोरेंसिक हमने बात कर ली, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, पेनिट्रेशन टेस्टर, रिस्क एडवाइजर कंसल्टेंट में ही आते हैं हमारे, ये आपके बाकी में भी आ जाते हैं। सो यू डू अ रिस्क असेसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सपोज एम्स है, तो आप एम्स के पास गए, आपने एक रिस्क असेसमेंट किया, आपने उनको बताया कि ऑन अ स्केल ऑफ 100 यू आर एक्चुअली एट 60, राइट। सो आपने एक रिस्क दे दिया कि आपका 40% जो है ना वो रिस्क है आपका। अब उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप एडवाइस करोगे, तो मिटिगेट दिस आपको यही चीजें करनी है, राइट। देन यू हैव कंप्लायंस ऑडिटर, जो हमारे ऑडिट करते हैं कि ठीक है, आपने अब इसको 60 से 80 पे आप इसको ले गए, या 90 पे आप इसको ले गए, तो उसका ऑडिट भी करवाओगे आप। एम्स ऑडिट करवाएगा कि हाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं है, सो दोस काइंड ऑफ थिंग। अब उन जॉब्स को करने के लिए आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, वो स्किल्स कैसे आएंगे? वो स्किल्स आएंगे, आपको नेटवर्किंग सीखनी पड़ेगी, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्राइमरीली विंडोज लाइनक्स, ठीक है। आपको उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, नहीं भी आती है तो स्क्रिप्टिंग से काम चल जाएगा। बट जैसे जैसे यू डू एडवांस इन योर करियर, इट्स बेटर दैट यू लर्न, राइट। एंड विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी इट हैज बिकम रियली इजी to do a scripting or learn programming language or do a programming language actually.
देन द सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, आपके फ्रेमवर्क्स हो गए, आपके सीआई ट्रायड हो गया, आपके एन्क्रिप्शन एंड ऑल दैट पार्ट, हाउ डू दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क. So if you have these two things ready, there is very high chance that you will get placed. ठीक है, अगर आपकी ये दो चीजें रेडी हैं, तो there is a very high chance that you can get placed. अगर प्रोग्रामिंग आपको स्टार्टिंग में नहीं भी आती, eventually you can learn. सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है. सो दीज टू थिंग्स प्राइमरली, ये हमारा प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी है, और ये तो प्राइमरी एड ऑन है, तो ये तो आप कीजिएगा. सॉफ्ट स्किल तो आई गेस आई वुड से कि इन एवरी इंडस्ट्री इट इज इम्पोर्टेंट, इन एवरी करियर. आप कहीं पे भी जाएं, आप बात कैसे कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, क्रिएटिविटी कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आर यू अ टीम वर्कर, आर यू अ टीम प्लेयर और नॉट, ठीक है. क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, आप में लर्निंग एटीट्यूड है कि नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि आप जो सीख के आए थे बस उसी के साथ कि मैंने इतना सीख लिया है, मैं और नहीं सीखूंगा, ठीक है. यू आर कॉन्टिन्यूसली पुशिंग योर सेल्फ टू लर्न न्यू थिंग्स, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग and you can't stay outdated. The moment you'll stop learning, you'll start degrading, right? So security field is actually ever learning field. तो कॉलेज वालों के लिए I would suggest you first start with internship. You have got skills, you have got the clarity. Start with internship. ठीक है, internship कीजिए, साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स कीजिए, वॉलंटियर वर्क कीजिए, राइट. इसमें से कोई एक या तीनों आप कर सकते हैं. सो दैट वुड हेल्प यू स्किल अप योरसेल्फ एंड बिल्ड योर प्रोफाइल. ग्रेजुएट्स के लिए आई वुड सजेस्ट आप इंटर्नशिप डायरेक्टली मत कीजिए, सिंस यू आर ऑलरेडी ग्रेजुएटेड. इंटर्नशिप आर फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली डूइंग देयर ग्रेजुएशन. So I would suggest do a good cybersecurity project. Build something, right? Any cybersecurity. You can check on GitHub. You can type GitHub cybersecurity projects. You'll get a list. You can see if you are able to build anything out of it. Then resume prepare कर लिया, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लिया. Then आपके प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, लिंक्डइन हो गया, जूनो हो गया. यूज दिस प्लेटफॉर्म्स, राइट. तो इन प्लेटफॉर्म्स का यूज कीजिए और रीच आउट कीजिए लोगों को. जो मुझे आपको एक हैक बताना था, दोज हु आर एक्चुअली कांट अफोर्ड द ट्रेनिंग पार्ट, राइट, वो कैसे कर सकते हैं ट्रेनिंग. So let me just take you. This part is done. This is done. So this is ecouncil.org. So EC Council की वेबसाइट है जो आपको CH का सर्टिफिकेशन देती है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर का, और मल्टीपल सर्टिफिकेशंस. ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको खुद से सीखना है, यहाँ पे जाए, सर्टिफाइड एथिकल हैकर का कोर्स करना है, या तो डाउनलोड ब्रोशर कर लीजिए, यहीं से उस ब्रोशर को रीड कर लीजिए क्या 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 चीजें कैसे कैसे कवर्ड है. या यू कैन डायरेक्टली गो हियर, स्क्रॉल डाउन, यू कैन सी द कोर्स आउटलाइन. दीज आर द मॉड्यूल्स जो कोर्स में करेंगे. ठीक है, एथिकल हैकिंग, अब टॉपिक्स ये कवर्ड होंगे. इन टॉपिक्स को गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए. आपके पास सीक्वेंस है, आपके पास टॉपिक्स हैं, और इनके बाद लैब कर लीजिए, चैट जीपीटी से पूछ के कि यार इस टॉपिक के लिए मैं लैब कैसे कर सकता हूँ.